हमारे साथ उपस्थित सभी दर्शकों और भक्तों का मैं प्रेम एवं आशीर्वाद सहित स्वागत करता हूँ। आज मैं जीवन का दूसरा तत्व श्रद्धा और आपके जीवन की वास्तविकता, इन दोनों के बीच में जो अनोखा समीकरण है उसके बारे में बात करूँगा। Today I'll speak on the unique equation that exists between authenticity and the reality of your life. When you expand what you think as you, directly you expand what you project as you, and you also expand and fulfill what others expect from you. Just like a film kept in front of the projector light is seen as a reality in the screen, Mamakara kept in front of the consciousness is seen as a reality in the life. Authenticity expands the Mamakara. Authenticity transforms the slide kept in front of the projector. So naturally that transforms. आज मैं जीवन का दूसरा तत्व श्रद्धा और आपके जीवन की वास्तविकता, इन दोनों के बीच में जो अनोखा समीकरण है उसके बारे में बात करूँगा। When you start working on authenticity constantly, every day you are reminded of expanding your mamakara, what you perceive as you, what you experience as you, what you feel as you. When you expand continuously what you feel as you, what you perceive as you, when you are working on what you perceive as you, I tell you, so much miraculous changes will happen. The way you experience your reality, life will change. How the life responds to you will change. How you perceive the life will change. Everything will change. जब आप स्वयं के बारे अपनी सोच को विस्तारित करते हैं, तब आप दूसरों के सामने स्वयं के बारे में जो प्रदर्शित करते हैं और दूसरे जो आपसे उपेक्षा रखते हैं, इन दोनों में भी विस्तारण होगा। जब आप स्वयं के बारे में अपनी सोच को विस्तारित करते हैं, तब आप दूसरों के सामने स्वयं के बारे में जो प्रदर्शित करते हैं और दूसरे जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, इन दोनों में भी विस्तारण होगा। श्रद्धा आपके ममकार को विस्तारित करता है। श्रद्धा आपके उस स्लाइड को परिवर्तित करता है जो आपके प्रोजेक्टर के सामने रखा हुआ है। इसीलिए आपके जीवन की वास्तविकता परिवर्तित हो जाती है। With authenticity, every day you have to work on your inner image. I tell you, working on your inner image is excitement. Thinking you cannot change your inner image anymore is boredom. As long as you are interested in developing your inner image, you continue to have life even if your body drops.
The day you decide you can't develop your inner image anymore, you are dead, even your body is functioning. So developing the inner image. Yesterday I received the essence of all the calls we receive from devotees all over the world who was watching the satsang morning in Sadhana TV and the website internet through Sadhana TV. I was getting the call register, what people are saying about when they call, what they are asking and all that. I was surprised. Almost 90% of the calls are just to thank. Just to thank. And not one, many people, Swamiji, I saw you in the TV and sat, forgot whatever I kept on the oven got burnt. In the furnace, the oven, the kitchen is burnt. And hundreds of calls saying that we found a new leaf of life. Listen. When you start developing your inner identity and that brings result in the outer world, you will be excited to grow spiritually. What is spirituality? Seeing the transformation you do in the inner world is seen as a result in the outer world is spirituality. The joy and the excitement you feel is because the moment you start the transformation in the inner world, the outer world is changing. Somewhere writing that the moment I saw you, I forgot everything. And every day morning I am waiting for morning 8:15. When you work on the inner identity, life is exciting. When you decide you can't transform your inner world anymore, it is death. When you give up on you, even if you are having the body, you are dead. When you don't give up on you, even if your body drops, you continue to live. श्रद्धा के द्वारा लगातार अपनी आंतरिक छवि को परिवर्तित कीजिए। जब आप श्रद्धा से अपने आंतरिक अस्तित्व को समृद्ध करेंगे, तब आप अपने बाहर की वास्तविकता का रूपांतर कर सकते हैं। आपकी आंतरिक व्यक्तित्व पर काम करना, उठे जाना है, उत्तेजना है, यह सोचना कि आप अपनी आंतरिक व्यक्तित्व को नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, ही बोरियत है। जिस दिन आपको यह लगता है कि आप अपनी आंतरिक व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते हैं, उस दिन आपकी मृत्यु हो गई है। केवल आपका शरीर जीवित हो, केवल आपका शरीर जीवित है। Don't give up on you. Go on developing your inner image. Listen. If you consider your life as an industry, your inner image
is the product. How you project you to the outer world is marketing. What others expect from you is feedback from customers. Constantly bring the feedback and develop the product. That is the only way you will be alive in the market. If you are working with humanity, this is the law of life. Constantly work on the mamakara. Don't give up on you. Don't give up on you. Work on mamakara. The moment you stop bringing the feedback from the customers and develop the product, when you stop it, you are dead. Just the tomb needs to be built on you, that's all. The coffin needs to be closed. However big maybe your brand is, however big you may be, listen, even if you are a big established brand, when you stop receiving the feedback from customers and developing your inner identity, society will start rejecting you. People sometimes ask me, why the big traditional mutts and organizations, even many of those mutts and organizations have become irrelevant to humanity, irrelevant to human beings. I know there are some of the Adinams, the center of the city, when the Pitathishwar does puja, even 10 people will not be there to receive vibhuti. Here I am sitting in the forest. Every day morning, hundreds, if not thousands, gather to listen. The reason is, when you think you are a big established brand and you don't need to get any more the customer feedback and develop the product, customers start rejecting you. They don't accept you because you are a big brand. They try you if you are a big brand. But only if they see the product is worthy, they continuously consume it. Otherwise, after trying, they dump it. If you don't take the customer feedback, the customers will be giving their feedback to others, which is very dangerous. Dhyan se suniye, listen. If you don't take the customer feedback, others will be getting the feedback. It is very dangerous. Without even you knowing, your brand is destroyed. Without even you knowing, you are already collapsed. That's the most unfortunate thing. If you want your life to be successful, constantly receive. Constantly get the feedback from customers, means others' expectation about you, who are all involved in your life, their expectations about you. We all ask the question, why should I fulfill others' expectation about me? World is so much of selfishness. Why should I bother what others want about me? Why? Listen. When you always want others should live as you want, others should fulfill your expectation, is it not others' right to expect from you? You will fulfill their expectation. At least whoever is involved in your life and how many lives you are involved, decide. Life is fulfilled. Listen. Life is fulfilled only when you fulfill
others' expectation with whoever you have expectation, at least. You don't need to fulfill the expectation of a person, somebody in the street with whom you have no expectation. But you have to fulfill the expectations of the people with whom you have expectations. If you have expectation with that person, the person has a right to have expectation about you. अगर आपको हर पल एक उत्तेजना भरी जीवन को अनुभव करना है, तो लगातार जो आपके जीवन में सम्मिलित अन्य लोग हैं, उनके आपसे जो अपेक्षा है उसके बारे में जानने की प्रयास कीजिए और उसे पूर्ण करने की अभ्यास कीजिए। आपकी चेतना के सामने रखा हुए ममकार वास्तविकता के रूप में जीवन में प्रस्तुत होता है। लगातार अपने ममकार पर काम कीजिए, अपने ममकार को विकसित कीजिए, अपने आप पर विश्वास ना को दीजिए। जीवन तभी पूर्ण होता है जब आप दूसरों की अपेक्षा को परिपूर्ण करते हैं। Listen with whoever you have expectation. They have a right to have expectation over you. Now I feel my responsibility has increased, especially with the satsang starting live in Sadhana channel. Because now millions are feeling my presence in their house. So many hundreds of calls just asking, I want to accept you as Guru. What should I do for it? Tell me. That's all. It means what? Now I have to take the responsibility of so many disciples. Now I have to fulfill all of them. Of course, I am taking the responsibility. There are some people saying that the moment I sit in front of your satsang, I feel Kundalini awakening. I can experience your presence. Your living presence through the live telecast. I am experiencing Kundalini awakening. My body is levitating. My prayers are getting answered. My questions are getting answered. Hundreds of calls. You are exactly talking to the doubts I am having. My doubts are getting cleared. Now I have to be responsible for millions of disciples happening. अगर आपको हर पल एक उत्तेजना भरी जीवन को अनुभव करना है, तो लगातार जो आपके जीवन में सम्मिलित अन्य लोगों की अपेक्षा जो आपसे है, उसके बारे में जानने की प्रयास कीजिए और उसी पूर्ण करने की अभ्यास कीजिए। कई लोग मुझे पूछते हैं, मैं दूसरों की अपेक्षा को क्यों पूर्ण करूं? जिन लोगों से आप अपेक्षा रखते हैं, उन लोगों की अपेक्षा को भी आपको पूर्ण करनी होगी। तभी आप अपने जीवन में अपनी मन चाहा वास्तविकता का सृजन एवं अनुभव कर सकते हैं। जिनसे आपको जीवन में कोई अपेक्षा है, उनको आपसे अपेक्षा रखने का अधिकार है। अगर आप मानवता के साथ काम कर रहे हैं,
इस जीवन का या नियम है, ध्यान से सुनिए। लगातार अपने ममकार पर काम करते रहिए, यहाँ तक कि यदि आप एक बड़े ब्रांड है और यदि आप प्रतिक्रिया प्राप्त करना बंद करते हैं तो आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। Constantly expanding your inner identity, expanding the identity you project yourself as you to others, and taking responsibility to fulfill what others expect from you is authenticity. I tell you, when you take responsibility to fulfill what others expect from you, cosmos expresses through you, the whole Brahmand expresses through you. You will have extraordinary powers because it is directly seva, service to others. Whenever you serve others with a responsible feeling, without having any other motive, cosmos celebrates your existence. It just celebrates your existence. Cosmos just celebrates your existence. लगातार अपनी आंतरिक व्यक्तित्व को विस्तारण करना, जो आप अन्य लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं, उस व्यक्तित्व का विस्तारण करना एवं अन्य लोग जो आपसे अपेक्षा रखते हैं, उस व्यक्तित्व का विस्तारण करना, यही प्रयास आपको श्रद्धा में स्थापित कर सकती है। लगातार अपने व्यक्तित्व का विस्तारण कीजिए। Continuously, when you desire to expand your identity, the way you project you to others and take responsibility to fulfill it, suddenly your reality starts changing. Your reality becomes better and better. What is your reality? Your perception about you, your perception about what you feel as you and what you project yourself to others and what others are expecting about you. When you practice authenticity, naturally you have to develop what you feel as you continuously. How to develop? The only way to develop your inner identity about you is integrity. With more and more and more integrity, you will be purifying your inner image more and more. When you take the responsibility to fulfill others' expectation about you more and more, you become more and more responsible. Understand? When you start practicing authenticity, your integrity and responsibility automatically starts happening. And you can't give up on you, you have to continuously enrich you. So enriching automatically happens. You can't give up on others, you have to enrich them. Enriching others automatically happens. जब आप लगातार अपने व्यक्तित्व को विस्तारण करने की निर्णय लेते हैं, तब आपकी वास्तविकता में
रूपांतर होगी और वह अधिक और अधिक बेहतर बनता जाएगा। जब आप दूसरों की अपेक्षा को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व उठाते हैं, तो ब्रह्मांड आपके द्वारा व्यक्त करता है, आपके पास असाधारण शक्तियां आ जाएंगी, क्योंकि आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं। जब आप किसी स्वार्थी उद्देश्य के बिना दूसरों की सेवा करते हैं, तो ब्रह्मांड आपके अस्तित्व को मनाता है। Listen, I tell you, every day, continuously, by developing your integrity, improve the identity you carry about you. Many teachers tell you, how much ever you listen, unless you practice, it won't help you. I tell you, how much ever you try to practice, unless you listen, it won't help you. Improve your listening. That is why I am talking very slowly. Unless you put your authentic listening, you won't be able to listen. You will miss. Only authentic listeners can listen what I am talking. Every day, by sitting in the satsang morning, this 1.5 hours, improve your listening. Authentically listen. Only if you listen, practicing is possible. आपकी सुनने की शक्ति को बताइए, श्रद्धा के साथ सुनिए, तभी आप इन सत्यों का अभ्यास कर सकते हैं। कई अध्यापक कहते हैं, सुनने से कुछ नहीं होगा, केवल करने से ही कुछ हो सकता है। मैं कहता हूँ, करने से नहीं, किंतु सुनने से आप अपने जीवन में एक नई वास्तविकता का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए पहले सुनिए, केवल सुनिए, सुनिए, सुनिए। श्रद्धा के साथ सुनिए। केवल सुनने से ही अभ्यास संभव है। Authenticity starts with listening, continues with listening, continues with listening. Human beings miss life when they miss listening. J. Krishnamurti says, listening is God. Buddha's first teaching is right listening. In Vedanta, the first principle is Shravana, listen. Second principle, Manana, internalize. Third principle, Nididhyasana, radiate it. Live it. Radiate it. श्रद्धा सुनने से आरंभ होती है और सुनने से ही आगे बढ़ती है। मानव जीवन को ही गवा देते हैं जब वे सुनते नहीं है।
श्रद्धा सुनने से आरंभ होती है और सुनने से ही आगे बढ़ती है। मानव जीवन को ही गंवा देते हैं जब वे सुनते नहीं हैं। I request all the satsangis all over the world, even if you are watching through sadhana, you are a satsangi. Take this as your life every day morning, this 1.5 hours. Sit with authenticity and listen. You will see miraculous transformations happening in your body and mind. गौतम बुद्धा का पहले सिद्धांत है सही तरीके से सुनना। वेदांत का प्रथम सिद्धांत भी श्रवण अर्थात सुनना है। हर धर्म का प्रथम सिद्धांत यही है, सुनिए। जय कृष्णमूर्ति जी ने कहा है, सुनना भगवान है। भगवान बुद्धा की पहली शिक्षा सुनना है। लिसनिंग इज गॉड। Just by listening, you experience God. वेदांत में पहला कदम श्रवण है, यानी सुनना। Constantly expanding your possibility for you and your possibility for others is authenticity. Your possibility for you and your possibilities for others, expanding it. If you are volunteering in our Sangha, associating with our Sangha, you will understand this whole Sangha is a training ground for making you experience authenticity. Authenticity, making you experience authenticity. Let the authenticity become your muscle memory and bio-memory. Let you continuously enrich you. जब आप लगातार स्वयं को विस्तारित करते हैं और बिना किसी भी अन्य उद्देश्य के, अन्य लोग के विस्तारित होने की जिम्मेदारी लेना ही श्रद्धा है। बिना किसी भी अन्य उद्देश्य के, अन्य लोगों के विस्तारित होने की जिम्मेदारी लेना ही श्रद्धा है। Expanding your possibility for you and your possibility for others is authenticity. लगातार अपने आप के लिए अपनी संभावना का विस्तार करना एवं दूसरों के लिए अपनी संभावना का विस्तार करना, यही श्रद्धा है। मेरा पूरा संघ एक प्रशिक्षण केंद्र है, आपको जीवन में श्रद्धा का अनुभव कराने के लिए। मेरा पूरा संघ एक प्रकाशिकन केंद्र है, आपको प्रशिक्षण केंद्र है, आपको जीवन में श्रद्धा का अनुभव कराने के लिए। I want everywhere, in every village, people gather
and start practicing these four principles: integrity, authenticity, responsibility, and enriching. This is the best way for human resource development. Hope Indian government takes these principles of life and gives training to the youth. Integrity, authenticity, responsibility, and enriching. When you teach integrity, authenticity, responsibility, and enriching, and practice it in your life, the amount of joy you feel and the expansion you feel and the experience you feel is unimaginable. So much can be brought out from your being. See, even now the only one idea which does not allow you to experience your maximum potential is, why should I do so much when others don't do for me? Fool. If others don't do, they are the losers. If you do, you are the winner. What society did to me, for me to continuously work and give it to society? Nothing. Society has not responded to my authenticity back, but I don't care. I continue to radiate my authenticity and going to expand my possibility for others and my possibility for myself. Naturally, society will has to respond authentically for me. No other way. No other way. जब आप संपूर्ण श्रद्धा उत्तरदायित्व उठाना एवं लाभान्वित करने की ये चार तत्वों का अपने जीवन में लाते हैं, तब आपके कल्पना से पारे एक अनिर्वचनीय वास्तविकता का आनंद आप अनुभव कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ है गांव में लोग इकट्ठा होकर ये चार सिद्धांत को अभ्यास करना आरंभ करे। संपूर्ण श्रद्धा, जिम्मेदारी और समृद्ध करना ये मानव संसाधन के विकास का सबसे उत्तम तरीका है। All the youth who are watching the satsang now, I request all of you, start the group in your villages to teach these four principles and develop the human life. मुझे आशा है कि भारतीय सरकार इन चार तत्वों का महत्व समझे और भारत के युवाओं को ये तत्व सिखाइए। जब आप इन चार तत्वों को सिखाते हैं और उनका स्वयं अभ्यास करते हैं, तो जो आनंद विस्तार अनुभव जो आप पाते हैं वो अकल्पनीय है, अकल्पनीय है। तभी आप जीवन का असली आनंद को अनुभव कर सकते हैं। Every village centers practicing this dharma should be created. Goshalas should be created. Temples should be created. तभी आप जीवन का असली
आनंद को अनुभव कर सकते हैं। Everywhere people should start living these principles. Satsang centers, teaching centers, ashrams, monasteries should be created. Hundreds of thousands of sadhus who are living these principles should be created. Hundreds and thousands of volunteers who are teaching these principles should be created. हमारी देश के हर गांवों में गौशाला एवं मंदिरों का निर्माण होगी चाहिए और लोगों को एक 4 तत्व जीना चाहिए। आज सत्संग का सारांश है आज की सत्संग की सारांश है लगातार अपने जीवन में सुनने की शक्ति लाइए। उसके बाद स्वयं के प्रति आपकी आंतरिक छवि को अन्य लोगों के सामने जो छवि आप प्रस्तुत करते हैं उस छवि को एवं अन्य लोग आपसे जो अपेक्षा रखते हैं उस छवि को, इन तीनों छवियों को लगातार विस्तरित करते रहिए। तभी आप श्रद्धा में स्थित होकर अपने मन चाहे कोई भी वास्तविकता का सृजन एवं अनुभव कर सकते हैं। तभी आप श्रद्धा में स्थित होकर अपने मन चाहे कोई भी वास्तविकता का सृजन एवं अनुभव कर सकते हैं। जीवन मुक्ति प्रदं देवं क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतम्। आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम्। आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं